Devendra, can you repeat it? यस सर। क्या हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि y1 के डेटा से कि ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म कर रहा है? See, when you draw this curve, you will know exactly minimum boiling है कि नहीं, क्योंकि कर्व मिनिमम बॉइलिंग पे क्या होता है? What happens if minimum boiling for minimum boiling azeotrope? सर क्योंकि यहाँ पे y1 के वैल्यूज पहले बढ़ रहे हैं x1 से के रिलेटिव में और फिर बाद में डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब 0.4 और 0.6 के बीच में कहीं तो वो एजियोट्रोप फॉर्म करेगा ना कॉम्पोजिशन। कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है? I am showing you this one. Are you looking at calculated values, right? X is 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, and 1. And Y 0.24, 0.42, 0.57, 0.751. कहाँ डिक्रीज हो रहा है? सर 0.4 के करस्पॉन्डिंग में वो 0.42 है और 0.6 के करस्पॉन्डिंग में वो 0.57 है, मतलब वो वहां पे पहले इंक्रीज था फिर डिक्रीज हो गया। You have to actually plot and see. You have to actually plot and see, because if you remember minimum boiling azeotrope में क्या होता है? Let me show you. Right, this is the minimum boiling azeotrope. व्हाट सर? Can you see this? सर आई एम नॉट एबल टू सी। हाँ सर अभी दिख रहा है। So, can you see this? यस सर। Yeah. So what you see is this PXY diagram, right? This is actually maximum boiling azeotrope. Minimum boiling ऊपर रहेगा. So this is the minimum boiling azeotrope. Can you see this? PXY. सर मैक्सिमम बॉइलिंग का दिख रहा है। Can you see this diagram? यस सर।
वैभव सर लेफ्ट झाले का रे? हा रे. रेंज नाही आहे, रेंज बँडविड्थ. बँडविड्थ प्रॉब्लेम. Hello, can you hear me? हाँ सर. Network is playing truant again. ठीक है, so question क्या था आपका? सर उस प्रॉब्लम में जो हमें y के वैल्यूज मिले हैं ना, वो मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप को करस्पॉन्ड करते हैं क्या? You will know, see, looking at data, it's very difficult for me to tell you. Just if you look at this P versus XY diagram, क्या दिख रहा है आपको? Px is above Py. That's all. Sir, if we draw XY equilibrium diagram, then Even then, you cannot say looking at just the data. If I look at this, just look at Pxy diagram. Px is always more than Py. बराबर. और जहां पर सेम वैल्यू है वहां पर वो मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप आएगा. अच्छा. Right? So just looking at data will not be able to tell because वो क्रॉस कहाँ हो रहा है उसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए अपने को. So it's best to always to draw the curve. इसने ड्रॉ नहीं किया है और you are supposed to draw the curve and see for yourself whether it is minimum boiling isotrope or not. सर वो
तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज फाइंड करने पड़ेंगे क्या बीच वाले भी बिटवीन 0.4 and 0.6? What is the question is construct PXY diagram. मतलब क्या आपको एक्चुअली ड्रॉ करने का ग्राफ पेपर लेने का और ये ड्रॉ करने का इसने बुक में नहीं किया है. ये जस्ट कैलकुलेट द वैल्यूज. नाउ यू हैव टू एक्चुअली टेक दिस वैल्यूज. प्रेशर दिया है, x1 दिया है, y1 दिया है, ड्रॉ करके देखो फॉर योरसेल्फ whether that is a minimum boiling azeotrope or maximum boiling azeotrope, whatever. ओके सर. जो हमने देखा था ना, px is always more than py, है कि नहीं यहाँ पर? When you saw that pxy diagram, px value was always more than py value, and then it was intersecting at x1 equal to y1, right? Just looking at data, you cannot tell whether minimum boiling azeotrope है कि नहीं है. You have to actually draw the curve and see for yourself क्या हो रहा है. And that is why if you take more points, 0, 0.1, 0.2, 0.3, तो आपको more accurate आएगा. इससे भी आएगा accurate, ऐसा कुछ नहीं है. But this is not an azeotrope for sure. So that will be homework assignment for you to draw the curve actually. Take the graph paper and see for yourself क्या हो रहा है. ठीक है? ओके सर. ओके सर. Okay, so then we'll go to the next problem. अगर ये सबको समझ में आ गया तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. Right? Can you proceed to the next problem then? यस सर. Hello. Can you hear me? यस सर. बीच में नेटवर्क जा रहा है, सो कभी कभी आवाज़ बंद हो जाएगा मेरा, इससे गायब हो गया था. सो ये क्वेश्चन आपको करना है क्लास में, ये कर लोगे? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. व्हाट डू यू से? नो रिस्पांस. Which sir? 8.21. 8.21. Let's solve 8.21. From vapor liquid equilibrium measurements for ethanol benzene at 318 Kelvin and 40 kPa, it is found that vapor in equilibrium with the liquid containing 38.4 mole% benzene contained 56.6% benzene. Right? The system forms an azeotrope at 318 Kelvin. At this temperature, the vapor pressures of ethanol and benzene are so and so. So P1s and P2s is given. Determine the composition and total pressure of the azeotrope. Assume that Van Laar equation is applicable for the system. So now this is an azeotrope. So clearly बोल रहा है. Reduction I am sure is not an azeotrope. But draw करके देखो आप, अगर मिलता है azeotrope तो बताओ मेरे को. ठीक है? So in this case we know that which is more volatile component, benzene or ethanol? Benzene. Benzene. Why? Boiling point कितना है benzene का? 80. Benzene is 80, is it? Yes, sir. And ethanol? Ethanol कम है.
78, I think so. 78.4 या ओके, तो बट वी हैव सीन वेन लार में अगर पता नहीं है, हमने उल्टा भी ले लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था हमने, राइट? कल किया था एक प्रॉब्लम सॉल्व, जो बुक में उसने एक डिफरेंट लिया था, 1 and 2 हमने डिफरेंट लिया था, राइट? सो इट डजंट रियली मैटर व्हाट इज 1 व्हाट इज 2, यू विल गेट द करेक्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो आपको चाहिए तो यू कैन टेक इथेनॉल एज कंपोनेंट 1, लेट्स डू इट डिफरेंटली and find out activity coefficients. Okay, so uh, so what is given is P1s and P2s, right? So can you find out gamma 1 and gamma 2? सर Yeah, स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, पहले बोलने का ना, नहीं दिख रही है तो ओके। सो कैन यू सी द प्रॉब्लम नाउ? यस सर। So from vapor liquid equilibrium measurements for ethanol benzene system at 318 Kelvin, and pressure is also given P 40.25 kPa, it is found that the vapor in equilibrium with liquid containing 38.4 mole percent benzene contain 56.1 mole percent benzene. So what does this statement mean? You can explain. ये क्वेश्चन आया था मेरे को, किसी ने पूछा था कल अंडरस्टैंडिंग के लिए। मतलब सर x1.384 है और उसके रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम में वेपर y1 0.566 है। Correct, correct. So x1 is given as 0.384 and y1 is given as 0.566, and this is benzene, right? Benzene is 0.384 in liquid and 0.566 in the vapor. Now if you want to do it other way around, you take ethanol as whatever component 1, वो करके देखते हैं, right? So calculate. Okay, the system forms an azeotrope at 318 Kelvin. At this temperature, vapor pressures of ethanol and benzene are 22.9 and 29.6 kilopascal respectively. I'll give you another hint. Looking at this vapor pressures, who can tell which is the more volatile component? Benzene. Yes. बेंजीन। Why? Because it has more vapor pressure. बिकॉज More vapor pressure, वेपर right? प्रेशर। So benzene is more volatile according to this data. Okay. So let us take it other way. It doesn't matter. Let's take component 1 as ethanol and component 2 as benzene and find out gamma 1, gamma 2. P1 as दिया है, P2 as दिया है, total pressure दिया है, x1 दिया है, y1 दिया है, right? Find out gamma 1 and gamma 2 using ethanol as component 1 and benzene as component 2. उल्टा करते हैं, बुक के हिसाब से नहीं करते. You should get the same answer. Okay, let's do it. कैलकुलेट करो और जिसका हो जाएगा रेज योर हैंड.
Okay, so Pratiksha More, new person. The क्या answer gamma 1, gamma 2? Gamma 1 is 2.004 and gamma 2 is 1.2382. मैंने कंपोनेंट चेंज करने को बोला था. What is your component 1? कंपोनेंट 1 क्या? कंपोनेंट 1 क्या लिया है? Benzene. मैंने बोला था इथेनॉल लेने का, बोला था कि नहीं? We are not going to follow the book, बोला था मैंने, right? We want to do it different way, so that you understand. कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ओके, सिद्धि आपने किया क्या? इथेनॉल गामा 1 एज हाँ इथेनॉल क्या वैल्यू है? हाँ gamma 1 is 1.238 and gamma 2 is 2.004. ओके, ठीक है. और कितने लोग का हो गया? ओके, गुड. सो गामा 1 गामा 2 मिल गया, राइट? x1 अपने को पता है, so we can find out the values of a and b from when are constants, right? Find out the values of a and b when are. Sir, for gamma, we can't we use P by. Yeah, can you unmute yourself, Dikshita, and say again? Sir, for to calculate gamma, can't we use P by POS? No, because it's an azeotrope. It's non-ideal solution. We have to use gamma. gamma के लिए क्या क्या बोल रहे हो आप? Gamma equal to P by PS. P by PS. As we did in the previous problems. Can you repeat your question, Dikshita? Sir, for azeotrope, we use gamma is equal to P by PS. So, matlab, using that formula, I am not getting the answer over here. नहीं आएगा ना. क्या दिया है? स्टेटमेंट पढ़ो प्रॉब्लम का. फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट. कैन यू रीड द फर्स्ट पार्ट? From vapor liquid equilibrium measurements for ethanol benzene system at 318 Kelvin and 40.25 kilopascal, it is found that vapor in equilibrium with a liquid containing 38.4% benzene contained 56.6% benzene. So is x1 equal to y1 is this condition? x1 क्या है?
Sir, it says that system forms azeotrope at 318 Kelvin. राइट, करेक्ट। फिर क्यों नहीं आएगा? Who can give me answer? Good question, Dikshita. Hello. Anybody has any question and has any idea of the answer to Dikshita's question? जो कंपोजिशन दिया है वो अज़ोट्रोपिक कंपोजिशन नहीं है, अज़ोट्रोपिक कंपोजिशन इज समथिंग एल्स व्हिच यू वांट टू फाइंड आउट, राइट? क्वेश्चन क्या है? कैन यू रीड फर्दर, दीक्षिता? Question is to find the composition and total pressure of the azeotrope. Yes, exactly. So ये जो composition दिया है, see when you saw that pxy diagram, txy diagram, right? Azeotrope is found at only one particular composition of liquid phase. It's not throughout. बाकी composition पे there is no azeotrope formed. So the value they have given is 38.4% benzene and 56.56% benzene in vapor phase is not an azeotropic composition. The azeotropic composition is something else, and we need to find that. That is the question. समझा क्या? So for the same temperature at different pressures, the composition is different. Yes, azeotropic composition is going to change. ये composition जो दिया है, because he has given x1 and x1 is not equal to y1, right? Azeotrope रहता तो he would have given, he would have said it is azeotrope, right? And said given only one composition. अभी दोनों दिया उसने, x1 दिया 38.4% benzene, y1 दिया है 56.6%. That means that is not an azeotropic composition. समझा ना? Yes, sir. That is why we have to find gamma 1 as by what equation? राउल्स लॉ से निकालना पड़ेगा हमारे को. Yes, sir. राउल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें गामा भी आएगा, x1 भी आएगा, y1 भी आएगा, राइट? गामा विल बी y1 into p upon x1 into p1s. ठीक है, कितने लोग का हो गया अभी गामा 1 गामा 2? रेज योर हैंड्स. ओके, एंड देन ए एंड बी का वैल्यू हो गया क्या? पहला इक्वेशन का ए का बी एंड बी का वैल्यूज हो गया. सिद्धि, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? One A की value 1.9597 and B is 1.5489. ओके, सो यू सी दैट अभी क्या हो गया, हमने उल्टा लिया. We just taken ulta, right? We have taken gamma 1 as gamma 2, component 1 as ethanol and component 2 as benzene. तो gamma 1 gamma 2 उल्टा हो गया compared to book, and similarly A and B भी उल्टा हो गया. A has become B and B has become A. That's all. और कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है? So if you have found the value of A and B, now what we need to do is we need to find the value of gamma 1 at azeotropic composition. Right? So find out
gamma 1 for azeotropic composition. इसमें x1 unknown आएगा, राइट? A and B का वैल्यू डाला तो इट विल बी अननोन वैल्यूज, राइट? So write the equations for ln gamma 1 and gamma 2 in terms of x1 and x2. And we need one more equation, one more condition has to be satisfied. Now Dikshita, your condition which you are mentioning, gamma 1 is equal to P upon P1s, we can use here, because now we are finding azeotropic composition. So we can write gamma 1 equal to P by P1s and gamma 2 equal to P by Ps, P by P2s. Right? So we have now two equations. आपका equation थोड़ा different आएगा, because we have used gamma 1 और वो component 1 as ethanol and component 2 as benzene. So we'll get some equation for ln gamma 1 and some composition equation for ln gamma 2. And similarly, we can write gamma 1 equal to P by P1s and gamma 2 equal to P by P2s. Right? P1s and P2s is known because temperature is same, but pressure is not known. So what we have to do is we have to do a trial and error procedure. Azeotropic composition is found by trial assuming values for x, so that these equations are satisfied. समझ रहा है आपको? वो दीक्षिता का डाउट फिर से बताओ ना. Dikshita was saying कि azeotropic composition के लिए gamma 1 is equal to P by P1s, right? But she was saying कि हमें जो ओरिजिनल कंपोजिशन दिया है, ये जो कंपोजिशन दिया है उसके लिए क्यों यूज कर सकते, बट दिस इज नॉट एन azeotropic composition. 38.4 जो x1 था बेंजीन था और 56.6 जो बेंजीन वेपर फेज था, दैट इज नॉट azeotropic composition. सो इस कंपोजिशन के लिए हम नहीं यूज कर सकते वो क्वेश्चन. उसके लिए हमको राउल्ट्स लॉ यूज करना पड़ेगा टू फाइंड आउट गामा. दैट्स व्हाट ही हैज डन, राइट? गामा इज इक्वल टू, ये क्या है, y1 p upon x1 p1s. He was saying, why can't we use P by P1s? We cannot use this because ये azeotropic composition है. This is not azeotropic composition. ये जो था, यहाँ पर हमारे को पूरा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा where x is different from y. y is 0.566, x is equal to 0.384. अगर सेम हो तो कैंसिल हो जाता था, P by P1s हो जाता था. तो फर्स्ट केस में जो डेटा दिया है हमारे को, उस केस में हमारे को x और y दोनों यूज करना पड़ेगा टू कैलकुलेट gamma 1 gamma 2. But now we are finding out, our question is not to find the composition of the azeotropic composition. So azeotrop में ये condition satisfy हो जाएगा. So we have an equation for P by P1s and P2 by P by P2s. So we have this equation and we have this equation and we have these two equations, right? अब इसमें unknown क्या है? x1 is unknown, x2 is not unknown. x2 is nothing but 1 minus x1. So इसमें एक unknown है और दो equations हैं, right? यहाँ पर P1s is known, P2s is known, P is not known. So we have to use trial and error procedure so that all the equations are satisfied. So he has assumed a value of x1 equal to 0.6. हमारे केस में x1 equal to क्या हो जाएगा? 0.4. 0.4 because we have reversed it, right? हमने इथेनॉल लिया तो हम हमारे केस में we have to use x1 equal to 0.4 and calculate all the values.
गामा 1 कैलकुलेट करने का, पुट x1 इक्वल टू 0.4 ईयर, कैलकुलेट गामा 1, पुट x1 इक्वल टू 0.4 ईयर, कैलकुलेट गामा 2, गामा 1 गामा 2 मिल जाएगा, कैलकुलेट p from, because p1s is known, p2s is known, right, and this should come same. Then our assumed value of x1 is correct. If this is different, if this pressure comes different, then we have to assume another value of x1 and recalculate gamma 1, recalculate p till we get the same value of p. यहाँ पर almost same है 40.93 and 40.778, तो उसने assume किया कि ठीक है, ये इतना चलेगा. समझ में आप लोगों को कैसे करने का ये? Yes, So assume value of 0.4 here for x1, calculate gamma 1, calculate gamma 2, put it in this equation. We know p1 as, we know gamma 1, we know p2 as, we know gamma 2, calculate p, and see if you get close values which are close. ठीक है, करो और बताओ आता है क्या, and raise your hand when you're done.
गया? किसका हो गया? किसी का हुआ क्या? वैभव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? So P equal to 40.77 and 40.93. ओके, बाकी सबका सेम आ रहा है क्या? दीक्षिता सर सेम। सेम ना? ओके, ऋतुजा सेम आ रहा है। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट नाउ यू सी जैसे क्या हुआ, टेम्परेचर सेम है बट प्रेशर इज स्लाइटली डिफरेंट। इनिशियल प्रेशर वाज गिवन अस 40.25 किलो पास्कल, और अभी जो हमने कैलकुलेट किया आइसोट्रॉपिक कंपोजिशन का प्रेशर इज अराउंड 40.86। सो स्लाइट चेंज इन प्रेशर कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। 40.25 था और यहाँ पर आपका आएगा अराउंड 40.86। थोड़ा सा प्रेशर चेंज किया तो ड्रॉप बन गया, थोड़ा सा प्रेशर चेंज किया तो ड्रॉप ब्रेक हो गया, right? Because that azotrope forms at only one particular value of pressure and composition or temperature and composition. हेलो सर, Yeah, यहाँ पे हमने ट्रायल क्यों लिया x1 का x के लिए? कैसे करेंगे नहीं तो? सर नहीं तो हम डायरेक्टली गामा वन हमारे पास है P/P1S, और जो इक्वेशन है हमारे पास जो हमने निकाली थी ऊपर के, ओके, तो वो दो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो P जो है वो निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? P, हाँ, ये जो इक्वेशन है ना ln गामा वन और ln गामा टू के, उनमें हम P/P1S और P/P2S सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लॉग के प्रॉपर्टी से वो क्या होगा कि P/P1S अपॉन P/P2S, तो P कैंसिल हो जाएगा, और फिर एक ही अननोन रहेगा ना x1, क्योंकि x2 तो 1 माइनस ये हो जाएगा x1। ठीक है, करके Gamma देखो is ना। also unknown ना? Gamma नो is नो, also unknown sir. अरे पण तिथे आपण P/P1S टाकलं ना। ठीक है ना, इज राइट, देवेंद्र ने बराबर बोल रहा है। इन दिस इक्वेशन इफ यू पुट gamma 1 इक्वल टू p by p1s हाँ and here you put p by p2s and we take equation this divide by this equation, right? तो क्या हो जाएगा? ये PP सब कैंसिल हो जाएगा, PP कैंसिल हो जाएगा, यू गेट P1s by P2s और P2s by P1 जस्ट जो भी रहेगा, और राइट हैंड साइड में यू गेट ओनली x1 because x2 is 1 minus x1, right? So you get only one equation for x1, you can calculate it, yeah. करके देखो, करके देखो, आता है तो अच्छी बात है, गुड गुड आइडिया, करके देखो, लेट्स सी इफ यू कैन डू इट। अभी इनको घर पे करके देखो एंड लेट मी नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x1 यू गेट, ठीक है? गुड यस सर, आई विल आइडिया, लेट। या गुड आइडिया देवेंद्र। सर या सर इस क्वेश्चन में इथेनॉल मोर वॉलेटाइल है ना? आई डोंट नो, क्यों? सर क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का इज लेस देन बेंजीन, और हाँ, अगर वेपर प्रेशर देखा तो बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो फिर ओके, okay, so we'll have to go back and see the pressure कैसे होता है, right? Let's go back and see this graph.
Okay. So if you look at this diagram, दिख रहा है क्या आपको ये figure 8.6? Yes, sir. Yes. Okay. So in this case, if you plot like this, pressure versus XY, this is PAS and PBS, right? So this is more volatile component, this is less volatile component. Barabar. Now, according to the data given, vapor pressure of benzene is more than that of ethanol. So it's more volatile, correct? That's what you are saying, Siddhi, right? Yes, sir. Yeah. So what we'll have to do is we'll have to actually use Clausius-Clapeyron equation and find out Clausius at this pressure 40.25 kPa, which is more volatile. Because what we have seen is when we search in Google, what you get is boiling point at 1 atmosphere, right? Benzene ka boiling point is 80.1 and ethanol is 78.37. So at 1 atmosphere, ethanol is more volatile than benzene. But when we change the pressure, 1 atmosphere is 101.3 something, right? Kilopascal. If I change the pressure to 40.25 kilopascal, then we need to find out what is the more volatile component. समझा मेरी बात आपने? हाँ सर समझा. Right? So I'll give you one more assignment, homework assignment. पहले ही बोला था मैंने ये करने के लिए, किसी ने किया नहीं है. Use Clausius-Clapeyron equation and find out the boiling point of ethanol and benzene at 40.25 kilopascal. ठीक है, कर सकते. Clausius-Clapeyron equation याद है किसी को? नहीं याद है. Let me see if I can find it. Okay, the same, but I'll show you the derivation. Okay, so this is a Clausius-Clapeyron equation. हमने किया था derivation, and there's the equation 6.28. दिख रहा है? Can you see this 6.28? Hello. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. So in this case, we have to use the heat of vaporization, find out heat of vaporization of ethanol and benzene. R पता है आपको, T1 पता है, T1 T2 है, right? T1 पता है, T2 निकालने का, right? So 1 atmosphere में P1S will be how much? At 1 atmosphere, and if I take benzene 80.1 something temperature T1, what will be P1S for benzene? 1 only, no? 1 atmosphere. 101.325 kilopascal. Okay, correct. और P2S is 40.25 kilopascal. हमारे यहाँ पर निकालने का है. Find out what is T2. Similarly for ethanol, find out heat of evaporation delta HV. Assume that is constant. Then again, you know P1S and you know boiling point of ethanol, and you know P2S 40.25 kilopascal. Find out T2, and let us see क्या आता है.
Okay, is this understood? Yes, sir. Okay, so do that homework and let's see, we'll discuss next week what are our findings. ठीक है? So we'll stop Yes. here, काफी time हो गया.